from other first two sessions? Yeah. So this is our third session on ecology and environment, and this session will be different from the first two sessions. In this session, we'll be reading about, and we'll be knowing about the international conventions. Okay, the next session will be a little bit lengthier. It will be on international organizations and the UNFCCC, or including all the COPs, all the COPs. Okay, is it audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Yeah. Okay, fine. So we'll start the class. So international conventions are of, again, we have only heard about international conventions, but there are international conferences and protocols along with conventions. So what these are? A conference is a consulting together formally, is a formal consultation type of negotiations. There is only a broad theme like climate change. There is no specific uh, matter or specific problem or specific issue they handle, but they deal with a broader concept like climate change. In a conference, the principal bodies are established for further deliberations if any is required on the broad theme for which the conference is called for. The principal bodies are established. These bodies will deal with these matters or these issues, and or the broader themes, where, and these are called the conference. And in the conference, again, the decisions they take, either they adopt some agreements or protocols, also conventions. So the principal bodies here are the might be of any international organization, non-government organizations, or any of the countries or nations. They come up, establish deliberations, and hold this conference on broader themes, come up with agreements or protocols or conventions. Is it okay? Yes, ma'am. Yeah. Then next we have convention. So convention is a meeting or gathering to formulate or deliberate on a generally accepted principle, a framework in which the parties decide the basic guidelines. Sometimes the link between conference and convention is very thin, and sometimes they are interchangeably used because the outcome document of convention is arrived at the conference. First time conference, then we are first time we'll have a convention. We will have a document, a principal document. This principle has been accepted, these steps are to be followed, these targets are to be set. So that is being laid out in the conference, or it might happen that conference will take first, then we'll have one convention. After the convention, we'll have a second round of the conference. Then we have a protocol. Protocol to the convention is an agreement that diplomatic negotiators formulate and sign as the basis for final convention, where the parties set specific aims or legal obligations, like our Kyoto Protocol. I guess everyone has heard about it. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay, fine. So, usually when a major provision is to be incorporated or regulations of convention, a protocol is called among the countries who are signatory of the original convention when it is signed and approved. So, by these examples, or you are able to get me now what is convention, what is conference, convention, and protocol. Okay. So further we'll see, you'll be able to get everything. What is protocol, convention, conference. So be attentive, everyone.
It is quite lengthy. It is quite. You can also say it's quite boring, but we have to study. This is one of the important part of environment and ecology. We have to remember lots of things. So better be ready with your notebooks or any of the registers or anything, and keep noting. So United Nations Conference on Environment and Development, UNCED. The Earth Summit, often referred to as the United Nations Conference on Environment and Development, took place in Rio de Janeiro in Brazil from June 3rd to 14th in 1992. This was the first kind of conference that took place for on environment and climate change developments and all. A massive effort was made to focus on the effects of human socio-economic activities on the environment at this international conference. It is first time ପାଇଁ ଗୋଟେ international level रे एमती ଗୋଟେ platform बनिला जोथरे all the nations, international organizations or existing international organizations समस्ते participate କରିଥିଲେ जोथरे कि effects of human socio-economic activities as a broader concept discuss ହେଇଥିଲା. This was held to commemorate the 20th anniversary of the first human environment conference in Stockholm, Sweden in 1972. So 1972 our first human environment conference hitila Stockholm re. ताकू commemorate ताकू ये celebrate करिया को हमारा UNCED GO रे that is in Brazil 1992 रे हेतिला. So political leaders, diplomats, scientists, media representatives, non-governmental organizations from 179 different countries attended. So it is not limited to the only to the nations, but also to all these entities, stakeholders. Is it okay? Yes, ma'am. Yeah. So Rio, it is also called as the Rio Declaration. We can call the Earth Summit resulted तीनटा documents ଆସିଥିଲା Earth Summit ରୁ. These are the Rio Declaration on Environment and Development. Please note down, these are important. The Rio Declaration on Environment and Development. Second is your Agenda 21. Third, Forest Principles. These three documents were the result of Earth Summit, and also two agreements were made during this Earth Summit. These are your Convention on CBD, Convention on Biological Diversity, and UNFCCC. समझते लेखी देला ना, मेंशन करला ना, because these three are important. गोटेला UNCED रे कोन कोठी हेतला रियो रे हेतला. It was to commemorate the 20th anniversary of Human Environment Conference in Stockholm. एथिरे समस्ते सब स्टेकहोल्डर्स पार्टीज थिले. फिर एथिरे तीनटा हमरो डॉक्यूमेंट्स रिलीज हला, रियो डिक्लेरेशन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, एजेंडा 21 एंड फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स. Dita agreement hitla, legally binding agreements, that is your CBD and UNFCCC. Okay. Then we will deal with convention on समस्त audible होची? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक अछि. Convention on okay, good. Convention on Biological Diversity. The Convention on Biological Diversity, also referred to as the Biodiversity Convention or the United Nations Convention on Biological (UNCBD), is a multilateral treaty. It is an international legal instrument that has been ratified by 196 countries. It focuses on the conservation of biological diversity, sustainable use of its components,
fair, equitable sharing of the benefits arising from the utilization of genetic resources. Okay, its overarching goal is to encourage actions that will lead to more sustainable future, and all habitat, species, and genetic resources are covered by the agreement. So here are three main goals rahila, যেটা sustainable use of its components rahila, conservation of biodiversity, sustainable use of this is 1, this is 2, and this is 3. Three main goals here. Okay, ଆମର ସେଥିରେ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ'ଣ ଆମେ ଆଡ୍ ହେଇଛି ଏଥିରେ କାର୍ଟାଜେନା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନ୍ ବାୟୋସେଫ୍ଟି ଟୁ କାର୍ଟାଜେନା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଆସିଲା ବାୟୋସେଫ୍ଟିର human health ଆଉ environment related data, biosafety, possible adverse effects of the products from modern biotechnology रे जो products ताको नेकरी, this is biosafety. Then your Nagoya Protocol on access to genetic resources and fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization. Nagoya Protocol eta biosafety rahila, eta hala amara Nagoya Protocol is on access to genetic resources, atara equitable utilization by all the stakeholders or all the nations also. And then amar setru Aichi biodiversity targets bhi asichi. Okay, just go through current affairs रे देखिला बेले Aichi targets को टिके देखि दबो. ए सबु genetic resources amara utilization टा होची Nagoya Protocol, Cartagena Protocol is your biosafety. Okay, next we have Ramsar Convention on wetlands. The Ramsar Convention on wetlands establishes the guidelines for the preservation and judicious use of all wetlands. The convention makes it possible through local, national, international collaboration as a means of promoting sustainable development on a global scale. The Ramsar Convention is the only international environmental agreement that addresses a specific habitat. और बाकी सबू ना different habitats को include करे, but Ramsar Convention wetlands, specifically only and only wetlands. से वर्ल्ड रे सबू wetlands रो गोटे record maintain गोटे list maintain हुए, तो तापरे सेथुरु से जोगरा को बेसी vulnerable अछंती climate change impact रुची से गोरा को से माने Ramsar sites रे declare करूछंती. It was adopted in Iranian city of Ramsar 1971 and entered into the force in 1975. World Wetlands Day is celebrated every year on February 2nd. Currently, there are 172 contracting parties to the convention. मते के कहबा कि wetland कोना? Anyone? केता पचारी भी लाने कि wetlands कोना? काहे कि तको हमें आर्द्रभूमि. हाँ? आर्द्रभूमि. Yes, okay, fine. So wetlands are these lands where the water table is at or near the land's surface or where it is submerged. So wetland role kona is regulating the environment and the plant and animal life. माने इटा हमारा गोटे specific habitat जोटा की ecosystem रे गोटे major role play करे. Okay. So Amara, right now there are total 75 Ramsar sites in India as of Jan 2023.
हमर फर्स्ट कोटा हेतिला चिल्लिकार चिल्लिका कोयला डियो चलो गुड सो करंट अफेयर्स रे मु 75 रामसर साइट्स को मैप रे लोकेट करके देखै देबी तो काई सेटा सेता बळे टिके अलर्ट रही कि नोट डाउन करबा हम सब 75 हमें माने रखे नेसेसरी नुहे बट द मेजर इंपोर्टेंट जोरा का न्यूज़ रे अछि रिसेंटली ऐड हिची एंड द फर्स्ट वंस से गरा का हमें रखिबा ओके वी हैव वन मोर मॉन्ट्रियक्स record in this. So our conference of contracting parties got a Brisbane in 1996 accompanying the guidelines for the operation of Montreux record. So what is a Montreux record? It is a register of wetland sites on the list of wetlands of international importance. Wetlands of international importance, where changes in ecological characters have occurred or occurring or are likely to occur as a result of the technological developments or pollutions or any of the human interference. So it is the principal tool of the convention and is maintained as a part of the Ramsar list. Ramsar convention and wetlands ଗୋଟେ Ramsar list बने Ramsar sites जो थे थाए Montreux record रे जो wetlands करा था it is a part of the Ramsar list. मैडम ए जो मॉन्ट्रियक्स रेकॉर्ड टा कहले आ रामसर कन्वेंशन भितरे मेजर डिफरेंस टा कोन होई परिबो मेजर डिफरेंस की वेट हमारा रामसर लिस्ट रे रामसर लिस्ट रे जो गरा को भी ऐड हुए से गरा को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन तक को मिले गवर्नमेंट्स कमिटमेंट था टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप्स टू मेंटेन द इकोलॉजिकल कैरेक्टर बट मॉन्ट्रियक्स रेकॉर्ड रे से माने ऐड हेले ठीक अछि चांसेस अछि से माने किछि भी तांको इंपैक्ट ता बेसी टाइम जाय माने थ्रेट अछि तांको जेतले थ्रेट ता एस्टैब्लिश हे जिबा से रामसर लिस्ट को आसीबे इट इज अ पार्ट ऑफ द रामसर लिस्ट सेथि पाए बहुत गुडे अछंती लिस्ट रे थिबे जो माने मॉन्ट्रियक्स रे भी अछंती मैक्स टू मैक्स एमती थाए मॉन्ट्रियक्स लिस्ट रे अछंती रामसर लिस्ट रे भी थिबे से माने बेसी किछि ज्यादा डिफरेंस नहीं बट दे आर डिफरेंट लाइक मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड गोटे रामसर लिस्ट गोटे मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड इज ऑफ लिस्ट एते हाइलाइटेड नाही किंतु रामसर लिस्ट को आसले सेटा हाइलाइट हे जाय पूरा ओके चलो नेक्स्ट यस मैडम थैंक यू मैडम sites. This is the also known as the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora is an international agreement between the states and it was established in 1973. The primary objectives of the site is to protect the world's plants and animals by making sure that the international trade in their specimens does not endanger their existence. Under the terms of this agreement, nations cooperate to control the international trade in plants and animal species to make sure that the trade does not threaten the existence of wild population. Any trade in species of the plants and animals that are under the site's protection must be sustainable and based on established biological principles. So it is a binding agreement between the parties, but it does not replace national legislation. So CITES is an international trade agreement on endangered species of wild fauna and flora. So this will control the international trade जोटी की threat किछि भी involved थिबा on existing wild populations. गोटे country suppose X country रे गोटे किछिटा वाइल्ड पॉपुलेशंस अछि से वाई कंट्री रु ट्रेड करिया को चाहुची इंटरनेशनल आई मीन एनी काइंड ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स सो से माने देखिबे कि वेदर इट इज dangerous to this wild population of this country वाई रु एक्स को आसिया पूर्वरु they will
सी तो साइट्स रे भी हमर केते गुडे साइट्स रे थाए लिस्ट रे थाए ए plants and animals and semane tanku and it would a binding agreement be must remember this. Then we have traffic, the wildlife trade monitoring network. Sites hochi international trade and of endangered species को control करे से cooperate to control the international trade और एटा को monitor करे traffic. The wildlife trade monitoring network traffic trade records analysis of flora and fauna in commerce is a non-governmental organization. It is a binding agreement. It is a non-governmental organization. The wildlife trade monitoring network monitors the trade in wild animals and plants with a focus on biodiversity and sustainable development. It began as a specialized group of the International Union for Conservation of Nature's IUCN Species Survival Commission 1976 and later developed into strategic partnership with WWF and the IUCN. Since its inception, Traffic has expanded to become the largest wildlife trade monitoring program in the world and a leading authority on the issues related to wildlife trade. Next, we have Convention on the Conservation of Migratory Species. The Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals is generally referred to as the Bonn Convention or CMS. This is also known as the Bonn Convention or the CMS. It is an intergovernmental agreement signed under the auspices of the United Nations Environment Programme UNEP. It focuses on the conservation of wildlife and ecosystems on a global scale. It is the only convention that addresses removing or harvesting wild species. 173 migratory species from all over the world are currently protected by the Bonn Convention. So, Convention on Migratory Species is your Bonn Convention or CMS. अब यहाँ पर migratory species ऊपर सादा सेमती किसी convention है नहीं और किसी programs भी है नहीं. So this is your Bonn Convention. समझते please kindly मन रखो. Questions it might come in your prelims or also you can write in your mains answer sheets. Coalition Against Wildlife Trafficking CAWT. The Coalition Against Wildlife Trafficking गोटे आमर थिला traffic गोटे आमर हैला sites और गोटे हैला आमर CAWT. ट्रैफिक रे से माने गोटे मेंटेन करंती नेटवर्क मॉनिटर करंती कि कोठी कोना वाइल्ड लाइफ ट्रेड होउची. So accordingly actions may be taken. FTA mane work karanti to stop the illegal trade in wildlife and wildlife products by mobilizing political and public resources. 2005 established voluntary public-private coalition of groups and organizations. Then is a one of a kind of voluntary public-private coalition of like-minded governments and organizations working towards a common goal. It is a Conservation International Save examples. Conservation International Save the Tiger Fund, Smithsonian Institution, examples the Traffic International, Wild Aid, Wildlife Conservation Society, American Forest Paper are among the 7 major US-based environmental business organizations with global interest and programs that have joined the coalition. एटा एते मने रखिबा दरकार नाही कार भी मने रहिबनी. But you should know it is a voluntary, one of a kind, voluntary public-private coalition. एते थोड़ा exam रे CAWT तो कोठी आसीनी देखिनी आसीबार still टिके register करिके रखिताओ कि इंटरनेशनल ट्रेड ऊपर रिलेटेड तमरा जहाँ भी अच्छी 3टा जिनस एगरा को रजिस्टर करी रखी था. तो ट्रैफिक इज इम्पोर्टेंट, साइट्स इज इम्पोर्टेंट. So CAWT membership is open to governments, non-governmental organizations, corporations committed to combating wildlife trafficking. Next we have United Nations Forum on Forest. UNFF is subsidiary body created by the ECOSOC. ECOSOC is the Economic Social Council of the United Nations. United Nations body. UNFF was established in October 2000 with the primary goal of promoting the management, conservation and sustainable development of all types
of forest to strengthen the long-term political commitment to this end. Based on the Rio Declaration, Forest Principles, Chapter 11 of the Agenda 21 and Intergovernmental Panel on Forests, IPF report. So that based on our first time देखिए Rio Declaration. Rio Declaration रे forest हमारा Earth Summit रे forest principles भी गोटे आसिथिला, Agenda 21 भी आसिथिला, and at एटा गोटे अलगा Intergovernmental Panel on Forest. We'll be studying this on our next class. So based on this, UNFFF function karuchi. So every member state of the United Nations as well as the specialized agencies make up for the forum's universal membership because ECOSOC yaku organize karichi. A set of 270 action ideas for the promotion of management, protection and sustainable development of all types of forests were produced as result of the IPF or IFF process. What is your IPF? Intergovernmental Panel on Forest. Then we have IUCN, International Union for Conservation of Nature. IUCN, formerly the International Union on Nature and Natural Resources thila, but nature is an organization that works to conserve nature and ensure the sustainable exploitation of natural resources. It involves advocacy, teaching, research, field projects, data collection, analysis. IUCN has expanded its focus beyond conservation ecology over the past few decades and also includes matters relating to sustainable development in its programs. IUCN Red List of Threatened Species was established in 1964. यार इटा गोटे major important list. IUCN को हमें सेमती सब जगह रे पढ़ू ना, हमें IUCN Red List of Threatened Species रे पढ़ू, and has since evolved into the world's most comprehensive data source on global extinction risk. गोटे animal species X तारा status कोन आमे सेरा केमते पढू IUCN Red List of Threatened Species रे से कोठी अछि, extinct रे अछि, vulnerable रे अछि, तारा कोड्स थाए तारे बाकी rest of the wildlife animals and plants पढे भी गोटे क्लास थर्ड मोर लास्ट क्लास टा प्रोबेबली सेटा रहइबो सेथरे मो IUCN बुक को केमती से माने रेड लिस्ट को केमती पढंती ता कलर कोड्स एंड ऑल we'll read on that during that class. Then we have Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, is a scientific intergovernmental body under the auspices of the United Nations. Again, United Nations asigala. It was first established in 1988 by two United Nations organizations, the WMO and the UNEP, United Nations Environment Programme and World Meteorological Organization. Please remember this. UNEP and WMO. Membership of the IPCC is open to all members of the WMO and UNEP. So IPCC produces reports that support the UNFCCC. IPCC reports cover all the relevant information to understand the risk of human-induced climate change, its potential impacts, and options for adaptations and mitigation. IPCC does not carry out its own original research. So IPCC released the third part of 6th assessment report, AR6 assessment report 6, titled Climate Change 2022 Mitigation of Climate Change, the Working Group 3 contribution to the 6th. Every year एमती तांकरा गोटे assessment report बाहरे, गोटे working group थाए जो कि contribute करे climate change 2022 mitigation of climate change एथरका तांकरा ये रहुची, but basically से माने climate change ऊपर ही करंती. Vision IS रो जेतरा PD 365 पे मैं पढू most probably first topic सब बेले एटा ही थाए assessment reports थाए first second topic. समस्या देखी थी I guess. yes madam, है ना fast रे अछि हाँ प्रथम सेटा सब बेले लेंदी थाए एंड सेटा एमती थाए कि आमे रीड करू किछि रिलेट करि पारुना. But this is what IPCC is all about. IPCC रो report 6th assessment report एबे जोडा AR6 बारुची सेगरा को देखिया कथा कि से क्लाइमेट चेंज रो को एस्पेक्ट को कवर करूची, फर्दर चेंज कोन हेची एंड से कोन स्टेप्स नौ छंती.
ओके इन शॉर्ट यार गोटे नोट्स बनै कि रखी दबो शॉर्ट नोट्स सब आमे मैनेज करि परिबानी रजिस्टर करिया को माइंड रे तो गोटे छोट नोट्स लिखि दबो कोठी भी एसे रे आसु या हमारा आंसर जो मेंस पेपर GS3 रे आसु we can write something on IPCC and the sixth assessment report जोटा ICCC बाहर करूची तारा इधर तमे डायग्रामेटिकली रखो कि theoretically rekha but please make a small note ready मो आंसर राइटिंग केतले करबी ना सेते बेले मु डिस्कस सेटा को भी करबी कोठी कोठी कहार केमती हमें इनकॉर्पोरेट करिबा we will discuss okay next we have the global tiger forum. Global Tiger is an intergovernmental and international organization created with the members from willing countries to launch a global campaign, adopt a unified strategy, and promote appropriate programs. The Global Tiger Forum controls to protect the world's remaining 6 subspecies of tigers, which are spread across the 14 countries with tiger ranges. The 6 species gara ka Bengal tiger, Amur tiger, South China tiger, Sumatran tiger, Indo-Chinese and Malayan tiger. This body convenes every 3 years and contributes to the development of norms and laws for its member nations. 6 tiger species, subspecies, 14 countries. Tiger ranges of 14 countries. Bas, etiki important Global Tiger Forum re. Then we have the Stockholm Convention and POP. हम first class रे हम पढ़िथिले Stockholm Convention विषय रे. Yes or no? Yes, ma'am. Yes. So सेतबे सब क्लास द्वारा करे ये conventions जो current affairs द्वारा का भी cover होची जेमति कि हम अबे IPCC विषय रे कहली एगरा को टिके notes करि देथिबो आ ए document ताको मु share करि देबी. एबे तो नुहे बट मोर जते बेले UNFCCC कवर हे जिबा पूरा कप सहित मोडा शेयर करबी एबे जहां भी नोट्स लिखि जंती पुणी आउथरे डॉक्यूमेंट को स्टडी करी किरी त साइड रे रेड रे कि या ग्रीन रे को भी कलर पेन रे या ब्लू ब्लैक कुछ भी सेही थरे एक्स्ट्रा थिंग्स टू बी नोटेड मु तीनटा जिंस कहली अर्थ समिट रो एगरा का सब टिके लिखि लेथिबा दिस इज योर फाइनल डॉक्यूमेंट जोटा कि तमे पढी के जिबा और बेसी 10टा जगह देखियार नाही ओके और फर्दर जदी किछि आसिला न्यूज़ रे को भी कन्वेंशन आसिला कि कोन मु सेरा ग्रुप रे शेयर करि देबी ए डॉक्यूमेंट को ऐड करि करि चलथिबो दिस विल बी योर बेसिस जोटा को तमे ऐड ऑन करि करि निजरो ही नोट्स बने जिबो एटा गोटे ओके So then we have the Stockholm Convention. POPs are hazardous substances made up of organic carbon-based chemical compounds and combinations. The Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants was adopted at the Conference of Plenipotentiaries on May 22nd, 2001 in Stockholm, Sweden, and went into effect on May 17, 2004. The Stockholm Convention on POP attempts to prevent or limit the usage of and creation of persistent organic pollutants. The COP adopted amendments to Annexes A, B, C of the Stockholm Convention and its fourth meeting in 2009, listing 9 new persistent organic pollutants. See, हमें first 2001 रे persistent organic pollutants को identify करिथिले and हमारा convention हेथिला. सेटा को प्रिवेंट करिलु तारा यूज को लिमिट करिलु एंड तारा अल्टरनेटिव्स भी हमें फाइंड आउट करिलु बट अगेन हमारा ऐड हे चले छी बिकॉज द नेचर हमारा जेंती इन साइंटिफिक एडवांसमेंट होची टेक्नोलॉजिकल यूसेज होची केमिकल्स हमें जेंती ओवर एक्सेसिवली यूज करू छे सो क्लाइमेट को हमें पॉप्स न्यू पॉप्स हमारा सेतरु बाहरुची जोटा कि हमारा फिर फर्दर 2009 रे फोर्थ मीटिंग हला नोटा ऐड हला नेक्स्ट ऑन पुनी बीटा ऐड हेची एमती करी कि तंगर ऐड ही का चलुची सो एटा गोटे सेते बेले हेई कि बस रही जायनी एटा टिके इवॉल्व होची सो कि सब बेले टेंशन रखिथिबो कि पॉप स्टॉकहोम कन्वेंशन ऊपर फिर कोन एक्स्ट्रा ऐड हला आई विल बी अपडेटिंग यू ऑल
Then we have Basel Convention. The Basel Convention on control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal was adopted March 22, 1989. Transboundary movements of the hazardous waste and their disposal. Important. It was implemented on the Conference of Plenipotentiaries in Basel, Switzerland, in response to a public outcry following the discovery of toxic waste deposits imported from abroad to Africa and other developing countries in 1980s. Its primary objectives are to stop the movement of hazardous wastes across the countries, prevent transfer of such trash from more developed to less developed nations. This treaty does not, however, regulate the transportation of radioactive waste. So, developed countries started dumping their waste into underdeveloped and less developed nations. ଯେତେବେଳେ ଅବଜର୍ଭ କରାହେଲା ଏଇଟା କି ଆଫ୍ରିକାକୁ ମେଜରଲି ଅବ୍ରଡରୁ ଆସୁଛି ସବୁତକ ୱେଷ୍ଟ ଟକ୍ସିକ ୱେଷ୍ଟ ଗୁଡାକ ଡମ୍ପ ହବାକୁ so they came up with this Basel Convention ki no they cannot. Then we have our Rotterdam Convention, is the name convention adopted in Rotterdam, Netherlands, 1998. Stockholm Amar 2001, Basel Convention 1989, and this is 1998. So it intends to promote shared responsibility with respect to global trade of hazardous chemical. The convention secretariat is located in Geneva, Switzerland. The prior informed consent PIC procedure is implemented under the terms and conventions which establishes obligatory legal responsibilities. The importing parties must make sure that exporting parties abide by any judgments made on their imports. किसी भी hazardous chemicals को हमें तरह import करूँचो global trade import या export करूँचो या trade रे involve होची City Rotterdam Conventions रा guidelines and principles सब तक follow होगा दरकार majorly 8 सेथि पाई Rotterdam Convention है जी. Then we have UNCCD, United Nations Convention to combat desertification. With climate change hela temperatures world रा बढ़िला average temperature 2 degrees बढ़िला कोतले 1 degree बढ़िला then 2 degrees बढ़िला and gradually हमें देखिलो कि हमारा जति की भी land अच्छी green माने forest lands अच्छी deforestation है कि री से माने gradually semi arid रू arid को move करू चंदी that is what they are getting converted to deserts. हमारा Sahel region हमें पढ़ी थिले first class रे ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ପଡୁଛି ନା ସେ ମ୍ୟାପ ଟା हेलो एवरीवन देयर Yes, ma'am. हाँ तो से मैप टा में जो फर्स्ट क्लास रे देखिथिले साहेल रीजन रो गोटे अफ्रीका मैप रे 11 टा कंट्रीज इंक्लूड इन थिला टिके सेटा को जाई कि ओवरलुक करि द टिके देखि देइथिबो कि what was there in that program को सेटा UNCCD रो CCD भी तार गोटे पार्ट माने मेंबर जोटा कि गोटे ग्रीन कॉरिडोर टाइप ऑफ थिंग अब ये करबो जोटा जोथरे कि फर्दर डेजर्टिफिकेशन आउ फर्दर सेंटर ऑफ द अफ्रीका या साउथ ऑफ अफ्रीका को आसीबनी बढ़िबनी. So the UNCCD together with United Nations Framework Convention on Climate Change and Convention on Biological Diversity is one of the three Rio Conventions. Okay, the negotiations of the UNCCD was called for in Agenda 21. The program of action adopted in 1992 UN Conference on Environment and Development UNCCD or Summit. The UNCCD was adopted on 17 June 1994 and entered into force in 26 December 1996. Dates mane rakhiba ete necessary nuhe. You should know eta kono actually kore combat desertification. Then together with UNFCCC and Convention CBD is one of the three Rio Conventions. All this. It is the only legally enforceable international agreement that connects the environment, development, and sustainable land management. Environment, development, and sustainable land management को
connect करूची. It is the only one legal enforceable agreement. Please समझते ए definition टाको मने रखी देता. You will be able to write this in your mains answer sheets. कि क्लाइमेट चेंज ऊपर किछि भी आसो UN ट्रिपल CCD करिकी लेखिबो आउ एमती क्लाइमेट चेंज खाली क्लाइमेट माने एटमॉस्फेयर को इंपैक्ट करूनी लैंड को भी इंपैक्ट करूची वाटर को भी इंपैक्ट करूची. It is the only convention that sprang directly from the Rio Conference's Agenda 21. The convention explicitly targets the arid, semi-arid, dry subhumid areas known as the drylands, which include some of the most vulnerable ecosystems and the people. तो desertification रू काहेकि combat करिया को एमती organization हला जेतेल desertification हेइ जिवो गोटे जगह सेमी एरिड रू एरिड को पळेबो सेमी एरिड रे सर्वाइव करूथबा इकोसिस्टम भी एक्सटिंक्ट हेइ जिवो तो एंड सेटा एरिड हेइ जिवो तो एक्सटिंक्ट हेइ जाउची इकोसिस्टम त हमरा वल्नरेबल होची पॉपुलेशन लॉस होची मेट बी योर एनिमल्स वाइल्ड लाइफ या प्लांट्स या पीपल इवन ह्यूमन बीइंग सेठी सबु टाइप रो चेंज होची not only climate change not only your temperature your land type change होची but everything your habitat change होची तमा niche change होची सारा environment change होची forest के ये surrounding भी change होची so that's why हमें combat करिया को desert further desertification जेमती न हो UNCCD was adapted during the Rio conventions ଆଉ सेरा सेते बळे हेतिला एबेरो टॉपिक नु है. Then we have International Whaling Commission. Whaling is the practice of killing whales for their food and oil. International Whaling Commission was established by International Convention for the Regulation of Whaling, which was signed in Washington, D.C. December 2, 1994. Its headquarters is in Cambridge, United Kingdom, and it is the international organization in charge of managing whaling and whale conservation. The objective of the International Whaling Commission is to ensure the proper conservation of whale stocks and in turn enables the industry's orderly growth. So Whaling Commission की European countries हो या US हो जोटी भी whales धरा को सेमाने कैच करिकी तंको हाँ किल करिकी सेथरु फूड ऑयल एंड अदर थिंग्स सेमाने डिराइव करूथले सेते तांकर मेजर इंडस्ट्रीज थिला अल्टीमेटली एटा लीड करिला एक्सेसिव किलिंग हेगला व्हेल्स का पॉपुलेशन डिक्रीज हला सो हमें जस्ट हमारा फुलफिल करिया को हम नीड्स लाइक फूड ऑयल इंडस्ट्रीज चलिया को गोटे स्पीसीज गोटे पूरा वाइल्ड एनिमल रो aquatic life रो हमें population को decrease करे दोजे तो that was a major concern सेथि पय गोटे convention आसिला on regulation of whaling सेथरु International Whaling Commission was established जे कि चेक करिबो whale केते whale conserve होची सॉरी चेक करिबो whaling को आउ केते whale conserve होची ता पाखरे data रहिबो से further rules and all your discipline सबु तक से माने laid out करिवे कि एथि whale catching area नु है IWC में थी अच्छी या तांका रूल्स मेंशनड अच्छी सो सबु जिंस है ना सस्टेनेबल वे जेमती मेंटेन हबो नॉट कि आमे हम ये जोगु सबु रिसोर्सेस सारी दबा सेटा को ही चेक करिया को एमती कमिशंस करा को सब आछि. Then we have Vienna Convention. Vienna Convention was adopted in 1985 and became effective in 1988. It serves as a foundation for the global efforts to safeguard the ozone layer, but it is devoid of legally obligatory CFC use reduction targets. The ozone layer of the earth is protected by the Vienna Convention for the protection of ozone layer and its Montreal Protocol 1987 on substances that deplete the ozone layer. हमरा Vienna Convention रे गोटे अडॉप्ट हला Montreal Protocol सेटा जेमते मु कहली आगो कन्वेंशन हला देन गोटे प्रोटोकॉल अडॉप्ट हला ताको हमको फॉलो देन रैटिफिकेशन 1997 का पार्टीज करिची ratify they have to follow these protocols. So International Day Montreal Protocol 35 been used because International Day for Preservation of the Ozone Layer was celebrated on 16th of September last year with the theme of Montreal Protocol at the 35.
global cooperation protecting life on earth जोटा तारा थीम थिला so please remember ozone layer atmospheric pollution से किछि भी आसीबा we will be writing on Vienna Convention and this Montreal Protocol. Also Kigali Agreement देखो at the 28th meetings of the parties the Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer was held in Kigali, Rwanda. Amended the 1987 Montreal Protocol to phase out hydrofluorocarbons. Montreal Protocol भी हमें गोटे क्लास रे डिस्कस करिथिले ओजोन जते बळे हमें डिस्कस करथिले सो आउथरे जाईकी ताको विजिट करि दबो. The Kigali Agreement is an amendment to the Montreal Protocol, an environmental agreement made by the nations to gradually remove the ozone depleting substances from the Earth's atmosphere. The 197 member countries signed the agreement to amend Montreal Protocol during 28 meetings of parties. Don't need to remember 28 meetings of parties actually, but Kigali Agreement re phase out hydrofluorocarbons हेतला amend करा हेतला 1987 Montreal Protocol को. Remember this. The signing countries are expected to reduce their production and use of hydrofluorocarbons by 80 to 85% from their baseline levels by 2045 according to the terms of the amendment. तो यार target year है हमारा 2045 भीतर है हमें 80 to 85% एबे जति की बेस रे यूज करूचे बेसलाइन लेवल्स रु जेमति रिड्यूस हबो प्रोडक्शन एंड यूज. This will slow global warming by limiting the increase in global average temperature to 0.5 degrees Celsius by the year 2100. Okay, then we have globally important agriculture heritage systems, GIAHS. Is a system of human communities that are always evolving and existing in a complex interaction with its territory, cultural or agricultural landscapes or wider social physical surroundings. इतने मन रखना नहीं बस इतनी कि evolving, existing in a complex interactions. The FAO, Food Agriculture Organizations of the United Nations, launched a global partnership initiative on conservation and adaptive management of this GIHS during the World Summit in 2002 on Sustainable Development, Johannesburg रहितला. The overall objective is to identify and protect global significant agricultural heritage systems and landscapes. In contrast to the traditional heritage sites, protected areas, landscapes, idea is more complicated. There are exceptional examples of aesthetic beauty that incorporate agricultural diversification, robust ecosystem, and priceless cultural legacies. Okay. Then we have Minamata Convention on Mercury. Eta bhi mu first class re padhethili. A global argument. Minamata is a place in which country? Japan, madam. Japan. Yes, very good. Thank you. A global agreement known as the Minamata Convention on Mercury was made to protect the environment and human health against anthropogenic releases and emissions of mercury and its compounds. Mercury ର uses ଯେତେବେଳେ ବଢିଗଲା ସେଇଟା aquatic fish जो animals ଆମର generally fish ରେ ସେ accumulate bio accumulate ହେଲା. Further ସେଇଟା nervous breakdown and all related diseases को human race eta hela, so that's why they came up with Minamata Convention after the Minamata disease. The Minamata Convention was adopted in 2013 Kumamoto, Japan. The convention has the name of the Japanese town of Minamata. Given that mercury poisoning had a severe impact on the city, this naming is significant symbolically. Since its entry into force on August 16, 2017, parties have been cooperating to control the mercury supply and trade, reduce mercury use, emission, release, raise public awareness, build institutional capacity required to make mercury history. Next we have the Global Environment Facility. एटा को भी मु डिस्कस करिथिली ता अंडर रे पांचटा आजि आउथरे elaborately डिस्कस करछे. The Global Environment Facility GEF unites 183 countries in the partnership with international institutions, civil society organizations, CSOs,
and the private sector to address global environmental issues while supporting national sustainable development initiatives. An independently operating financial organization, the GEF provides grants for projects related to biodiversity, climate change, international waters, land degradation, ozone layer, POPs. Okay, so basically gote financial organization eta mu sedina bi kahithili, it is a financial organization jota ki biodiversity conservation ko relate karuchi, climate change steps ko nouchi, international waters ko, land degradation, ozone layer and POPs ko. So the also serves as a financial mechanism for the following conventions. It is a must, yaku pura bhalse mane rakhi diya, last moment रे एटा रिवाइज करिया को दिसिबनी, but you should remember this aji itself done and dusted करी रख. गोटे हला हमरा CBD, गोटे UNFCCC, गोटे UNCCD, स्टॉकहोम रो POPs, मिनामाटा and Mercury. These 5. Formally ए पांचटा सहित GEF linked अछि. GEF अछि गोटे financial mechanism, CBD, UNFCCC, UNCCD, Stockholm Convention on POPs and Minamata Convention on Mercury. These 5 also, although it is not linked formally to Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer, but supports the implementation of the protocols with economies in transition. से support करे अन्य को, but not formally. जेमती पांचटा सहित पूरा formally linked अछि से कि याकर जहाँ भी हबो तक फाइनेंस करिबारे माने हेल्प करिवे. पूरा याकू तो पूरा GEF लेखिकिरी तार करि दियो पांचटा. Answer को please मने रखिबो. ए क्वेश्चंस रासि पारे. Which of this is not included is not a convention related which the GEF serves as a financial mechanism? You should be able to know ए पांचटा रु आ जोटा भी थिबो सेतरे करिबो. सेटा नुहे. Then we have UNFCCC. एटी मु आजी टिके जिस्ट खाली कह दोची. नेक्स्ट क्लास हमरा UNFCCC और बाकी सब कॉप्स रहिबो. हमरा आईटी टारगेट्स भी मु देखिबी. Agenda 21 भी टिके डिस्कस करिबी नेक्स्ट क्लास रे हमरा. So United Nations Framework Convention on Climate Change is a primary multilateral treaty governing the actions to combat climate change through through adaptation, mitigation efforts directed at control of emission of greenhouse gases that cause global warming. Even though climate change is a global concern, some of the countries are majorly responsible for greenhouse gas emissions into the atmosphere. Many island nations are facing the major brunt of this climate change in the form of sea level rise, cyclones, erratic weather conditions, etc. UNFCCC is a major step in the direction to control the downward spiral of the climate change. It is called the Rio Convention along with its sister conventions. Sister conventions are कौन थे? UN Convention on UN CBD और गोटे हला हमारा CCD Convention combat desertification. अच्छा, there is one more we have, that is your Kyoto Protocol. So please note down, it is an international agreement established under the UNFCCC. With the aim of addressing global climate change. Kyoto Protocol एबे effective नुहे but still holds importance, so सेटा को टिके भलसे पढिबो. Kyoto Protocol I'll be discussing during next class because we will be studying UNFCCC elaborately. Okay, तो last रे मु revise करे देबी, so समस्ते kindly attentive रुहा. आमे जो मेजर एनवायरनमेंट इंटरनेशनल कन्वेंशंस कवर करिले सेटारे वी विल बी सेग्रीगेटिंग इट केमती ना गोटे हला नेचर कन्वेंशन रहिला, कंजर्वेशन रहिला,
गोटे हमर hazardous material related रहिला, गोटे land रहिला, marine environment, atmosphere मुझे लेखुची सेमती ही लेखिकी रखिबो. Nature conservation 1. Second is your hazardous material. Third is your land. Fourth, marine environment. Fifth, atmosphere. All your conventions are widely spread across all these 5 points. तो हमारा atmosphere रे कौन कौन रहेला? Vienna Convention and Montreal Protocol. और UNFCCC और Kyoto Protocol. Vienna Convention, Montreal Protocol, UNFCCC and Kyoto Protocol. Marine environment रे आज मु कोन कहितली Whaling Commission, International Whaling Commission. Land रे land related गोटे ही हमारा रहिला सेटा होची हमारा UNCCD Combat Desertification Convention to Combat Desertification. Hazardous रे anyone कुआ किछि भी भूल हेले चलेबो. Hazardous material को conventions cover करूथला? बोन कन्वेंशन, Basel con बेसेल कन्वेंशन. Yes, Basel Convention, Stockholm and your Rotterdam. Okay, then amara nature convention now jeti ki amara rahila like your UNCED environment and development, your CBD, Ramsar, tamara sites rahila, traffic, CMS conservation of migratory birds species, then your CAWT coalition against wildlife trafficking. तमरा आगुटे रहिछि इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन. एते न्यूज रे तो सेटा आसीनी सेत मैं तको करनी कि रे टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन टिम्बर कंजर्वेशन ऊपर सेटा बट टिके याद रखिताओ कि एमती अछि इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन. देन योर यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट IUCN and Global Tiger Forum GTF. All these conventions are under nature convention. Hazardous material रे तीनटा, land रे गोटे, marine environment रे गोटे IWC, atmosphere रे तमरा Vienna Convention रे Montreal Protocol, सेतरे पुनी हमारा किगाली टा रहइबो किगाली एग्रीमेंट, UNFCCC रहउची जोटा कि ब्रॉडली गोटे कांसेप्ट जहा अंडर सब तक कप सरिका रहइबो. छोटो कांसेप्ट नु एटा इटसेल्फ गोटे दिन कंज्यूम कर देबो पूरा या ताकू रजिस्टर करिया रे. And we have the Kyoto Protocol. Kyoto Protocol हाँ एबे नहीं effective नहीं but still it is important. Okay? काहाको किछि पचारियार अछि? मु ए डॉक्यूमेंट शेयर करि देबी मो नेक्स्ट क्लास परे मु आको शेयर करिबी किंतु मु जेमती कहली सेमती यदि लेखि कि रखिबो नाले एटा भी बही परिका रहि जिवो किछि यूज रे आसीबनी. लास्ट मोमेंट all this revision is not at all possible. मु एबेठु कहूची एबेठु मुंडरे पसे दबार अछि कि एमती कन्वेंशंस अछि एमती जगह रे हेतिला एई इश्यूज को से माने एड्रेस करिथिले एंड तांकर नेक्स्ट एडवांस अपडेटेड फॉर्म्स गरा को एई गरा को कोटा काम रे आसुनी को मेजर इश्यूज रे केतरा टाइप्स रो अछि सेमती करिकि तमे नोट्स बनाओ एंड फिर ताको रिवाइज करो एंड इट शुड बी डन before 1 month before prelims सब ओवर हेतिबो. या ए नोट्स ऊपर फर्दर करंट अफेयर्स देखिबार अछि से करंट अफेयर्स रे कोन कोन एक्स्ट्रा अछि ताकू सेठी ऐड ऑन करि दबो से गोटी नोट 4टा पेज या 5टा पेज रो ही नोट्स तमरा रहिबो तम पाखरे एनवायरनमेंट रो. बाकी बेसिक डेफिनेशंस एंड ऑल सेरा तमरा अलगा नोट्स रखिबो. सो गोटे जिनस के चाहते कि मु PT 365 विजन रो एनवायरनमेंट भी कवर करिबी एथरे मु किछि पार्ट्स तक देखि दउची जोरा का इंपोर्टेंट रहउची टिके स्टिल यू वांट कि एक्सक्लूसिवली सेटा कवर होबो.
करंट अफेयर्स पाई एनीवन समस्ते अछंती राइट Yes. हाँ Yes, madam. हाँ तो समस्ते पीटी 365 तो देखी थी राइट यस मैडम हाँ इज इट बहुत इजी बहुत बल्क बहुत बहुत बल्कि राइट हाँ यस एग्जैक्टली बहुत डाटा हे जाउची आपण सेटा हम माने टिके कहि देबे जे कोटा इंपोर्टेंट जेमते एबे कहले एते एग्जैक्टली दरकार नै सेटा इंपोर्टेंट सेटा बस ही बस दरकार मैडम मो ये सेशंस कवर करला परे मो प्रीलिम्स पाई पीटी 365 को कथा हे प्रियव्रत सहित एंड मु तार नहीं जीबी दीटा तीनटा क्लास नहीं करी ताको वाइंड अप करे दबा हैला बिकॉज तमो करंट अफेयर्स रे सेठु ही उठौची बट बेसिक टॉपिक्स उठौनी जेतरे बहुत ज्यादा अछि ताको एते इजीली ग्रास्प करबा इजी माने कन्वीनियंट होई परिबनी जति कि इंपोर्टेंट हमें सेति कि देखिबा बट सेटा अगेन मेक श्योर कि ताको भी हमें मेंस रे यूज करि परिबा जेमति ओके सो आई विल टेक अ क्लास आफ्टर माय ए सेशन ता पूरा कंप्लीट हे जिवो एनवायरनमेंट रो नेक्स्ट सेशन हमर यूएनएफ ट्रिपल सी ऊपर रहइबो टिके एलाबोरेट रहइबो ता पई भी मो एमती डॉक्यूमेंट्स बनै देथिबी एंड सेटा से क्लास सरला परे आई विल शेयर इट हमर कन्वेंशंस गोटे हे जिवो गोटे ऑर्गेनाइजेशन हे जिवो आ तापरे जो वाइल्ड सॉरी एनिमल्स एंड प्लांट्स आईयूसीएन रो रेड बुक लिस्ट रे कोठी कोन अछंती आ कोगरा कहबे राइट नाउ न्यूज रे अछि कल सेति की देखि दबा इन्वेसिव स्पीसीज से तरह कवर हे जिवो माइग्रेटरी बर्ड्स जोरा ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस अछि सेटा भी कवर हबा तो केते बहुत गुडे करंट अफेयर्स हमें सेथरे ही कवर करि दबा ओके आ बाकी जहाँ बेसिक्स रो रहिला लाइक योर इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड ऑल सेटा भी मु गोटे क्लास भितरे ताकू मु कवर करिवि आउ को इंपोर्टेंट टॉपिक अछि जोडा चाहू छ मु नेबी तो मते व्हाट्सएप रे मेल से ग्रुप रे लिखि दबा कि मैम ए टॉपिक ता पढियार अछि मु गोटे क्लास रखिबि एतरे तम मानक जो रेकमेंड करिथिबो जो जो टॉपिक्स जोरा का मु टच करिनी या फिर मते रिपीट करिया को अछि सेरा मु नै जिबि सेरा मु एक्सप्लेन करि देबी कि एटा एमती एमती कि को बुक को रेफर करार अछि बुक स्पेसिफिकली शंकर आईएएस को धरा जाऊ बट शंकर आईएएस भी थ्योरी जेते ज्यादा अछि थ्योरी कि हमें एते पढिया मुश्किल होची सो मु जहा जहा पढौची से को देखि चलो किछि किछि तार आग पछ पेज किछि ऐड ऑन करियार थिबो ऐड कर ए नोट्स द्वारा का ऊपर ऐड करि दबो इजी हबो कन्वीनियंट हबो एंड इन शॉर्ट हमर रिवीजन भी हे परिबो जेमती बिकॉज प्रीलिम्स रे तो फिर भी इट्स ओके केतेटा क्वेश्चंस आसीबो एनवायरनमेंट रो कंपैरेटिवली आसीबो कैन सेठी मार्क हमको आनियार अछि बाकी क्वेश्चंस इकोनॉमी हला कि कोन हला चांसेस अछि भूल हि जिबारो या केते लोकन स्ट्रांग न था इकोनॉमी पार्ट या पॉलिटी पार्ट ए करा को टिके करंट अफेयर्स रिलेटेड आसीबो एमती ही आसीबो जो जीईएफ कोन कवर करेला बेसलटा कहा ऊपर है स्टॉकहोम रॉटरडैम बेसल आउ गोटे कोन पके देथिबे कियोटा पके देथिबे व्हिच ऑफ दिस इज नॉट रिलेटेड टू हैजार्डस मटेरियल एमती आ गोटे क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर देबी ओके यस मैम आउ किछि कहर अछि आउ एनी फर्दर आउ किछि ऐड करिया क्लास को हम एटा सेकंड क्लास मैडम एटा थर्ड क्लास मैडम फर्स्ट सेकंड टिके नोट थोड़ा मैडम फर्स्ट सेकंड रा YouTube रे वीडियो अछि तार मन्ती नोट्स बने नथली तार मो प्रेजेंटेशन स्लाइड्स अछि एटा जेहेतु कन्वेंशंस आसीची याको मो आउ स्लाइड्स बनेबा ठीक भाबिलिनी एमती नोट्स बनेली एटा मो शेयर नेक्स्ट क्लास परे करि देबी सब गोटे कंपाइल करी कि पूरा कन्वेंशंस रो ही नोट्स तुमको दे देबी सेटा को ही पूरा रखि दबा ताको पूरा माने प्रॉपर्ली रिवाइज करिकरी ताको थोय दबा आउ देखिबा जेमती पडिबनी बिकॉज़ जतबेले मु विजन धरिबी ना पीटी 365 सेरा तो देखि चही केते डिफिकल्ट रहउची बेसिक को धरिबा ना ताको धरिबा बेसिक को क्लियर करि दियो ता ऊपर ऐड ऑन्स हमर रहिबो इजी तुमको मु तळे किछि भी यूएनसीसीडी कहिबी यू शुड बी एबल टू नो कि यूएनसीसीडी केबे आस्तला कोठु आस्तला कोन आस्तला कोन करथला लैंड ऊपर गोटे कन्वेंशन दैट इज योर यूएनसीसीडी तार सिस्टर कन्वेंशंस कोन थिले बाकी सब सब माने रेडी थिबा दरकार बेसे मु पढेला बेले कहि कहि जीबी सो यू शुड आल्सो रजिस्टर इट अकॉर्डिंगली है चलो Yes, ma'am. अच्छा आ काको किछि कहर अछि मैडम क्लास रा टाइमिंग टा टिके नेक्स्ट क्लास रा
नेक्स्ट क्लास रा टाइमिंग सी फिर भी इवनिंग मु काली तो प्लान करथिली बट काली बहुत गुडे क्लासेस रहि जायतिला सेट पई मु आज को आसिली ता पूर्व दिन करथिली बैक टू बैक तमा करंट अफेयर्स क्लास रहिला एंड पॉलिटी क्लास रहिला सो मु फिर शिफ्ट हला एमती पोस्टपोन ही जायची कोई बात नहीं नेक्स्ट क्लास मु प्रोबेबली वेडनेसडे नेबी बट वर्किंग वीकडेज रे मु इवनिंग या 10 o'clock 10 PM इन द नाइट नेबी नहले सैटरडे संडे मोर ऑफ थिले मु मॉर्निंग रे नेबी यस मैम ओके तो मो सैटरडे से कमिंग सैटरडे तो ऑफ अछि सेकंड सैटरडे मो से दिन तो मॉर्निंग रे नेबी संडे भी बैक टू बैक क्लास नेबी बट वेडनेसडे गोटे क्लास नेबी ठीक अछि मैम ओके आ एथिरे ग्रुप रे की अछंती जे सोशियोलॉजी जे जॉइन करछंती ग्रुप यस मैम अच्छा आज 4 PM रे सोशियोलॉजी रो भी क्लास गोटे इंट्रोडक्टरी शॉर्ट इंट्रोडक्टरी सेशन हबा सो सेरा जॉइन करि जिवो ओके आज्ञा मैम हां मु आंसर राइटिंग हमें वीकली करिबा बट गोटे छोटो सेशन रहइबो कि कोन एक्चुअली से प्रोग्राम रे हमें इन्वॉल्व इंक्लूड करूचे को पॉइंट्स हमें टच करिवु एंड केमती हमें फर्दर हमें आगु को मूव करिबा ओके एंड प्लीज समस्त को सेटा कम्युनिकेट करि देथिबो आज्ञा मैम ओके थैंक यू सो मच हम आपण को क्लास नउछन मैडम मु एनवायरनमेंट इकोलॉजी एनवायरनमेंट नउची एंड एबे मु सोशियोलॉजी आंसर राइटिंग ता आज टू स्टार्ट करेबी हां है ना ठीक थैंक यू मैडम जो फ्लोरा को फ्लोरा फना और स्पीशीज विषय किसी प्रिपेयर या होगा पड़ियो फ्लोरा फाना स्पीसीज मोर गोटे पूरा क्लास गोटे रहिबो जोतरे कि सब पढिबा दरकार नै जोगरा का हमर करंटली न्यूज़ रे अछि IUCN ताको एक्सटिंक्ट या वल्नरेबल डिक्लेयर करि दोउची बहुत सारा कंजर्वेशन करिया को स्टेप्स आ ये सब माने एग्रीमेंट सब बनै दोउछंती सेई गरा का हम डिस्कस करिबा किछि गरा का त हम माने इजीली या रिमेंबर करि परिबा बट जोगरा को टिके डिफिकल्ट सेई गरा का हम मु कहिबी मु स्पेसिफिकली ताको स्ट्रेस करि देबी जोगरा का इंपोर्टेंट अछि सेटा गोटे क्लास हबो मोर बट राइट नाउ मु कन्वेंशन दीटा क्लास रहिबो गोटे क्लास ऑर्गेनाइजेशन रहिबो इफ पॉसिबल सैटरडे वाला क्लास टा टिके अधिका टाइम नै करी मु जहाँ भी फ्लोरा फाना एंड क्लाइमेट चेंज तमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट्स एगरा का ग्लोबल वार्मिंग एगरा का भी कवर करिबी ओके मैम एथरो ईपीएस रे बहुत सारा जो एई फ्लोरा फना स्पीशीज ऊपर पचारतला हम ओपीएस रे तो सेमिति किछि पचारियो हाँ ना पचारि पारे से पचारि पारे गोटे इन्वेसिव स्पीसीज रा से साइंटिफिक नेम देकी पके दबो कहबाटा को काइंड ऑफ स्पीसीज एते पके न पारे काइना हमर ए जो फॉरेस्ट एग्जाम ता तार अलगा होछ ना ईपीएस रे तार एकाटी करछन सेमती किछि माने नाही कि यूपीएससी तारा फॉरेस्ट को इंटीग्रेट करके रखिछि बोली एनवायरनमेंट ऊपर ज्यादा फोकस करूछि यूपीएससी रो किछि एनवायरनमेंट पे न मैडम ए जो फ्लोरा फाना स्पीशीज बहुत सारा फ्लोरा पचारतला फाना तार स्पीसीज को से पकेइतला सी तो एवरीथिंग अंडर द सन से तो पकेइ पारिबो तारा किछि नाही बट ओपीएससी भी चेंज होछि ना यूपीएससी लाइन रे देखि किरी तो हमें प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट हेथिबा दरकार so that we can give our best prepare for the worst मु एते डिटेल हमें बेसी ज्यादा जति की करि परिबा सी हमको कट ऑफ क्लियर करियार अछि आ 200 टू 200 आनियार नाही ये 200 आनले कोन सेरा तो मेरिट रे ऐड होची की ना कट ऑफ क्लियर करियार अछि सो वी शुड नो कि को क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करिबा को क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिबानी को क्वेश्चंस रे नेगेटिव हबाटा श्योर शॉट अछि सेटा हमको अटेम्प्ट करियार नाही सो फ्लोरा फाना में देखिबा बट जोगरा का करंट अफेयर्स रिलेटेड अछि 5 इयर्स भीतर जोटा करंट अफेयर्स से रिलेटेड अछि सेति की ही हम पे इंपोर्टेंट सब